Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you all will be fine. Okay, let's start with the biotechnology. Biotechnology basically is the use of biological processes which are involving the microorganisms. That with the help of microorganisms, we can produce the substances which are required or which are very much helpful for the human. So by using microorganism, we are providing substances for the services of the mankind. Okay. And biotechnology is mostly linked with the genetic engineering. In this genetic engineering, we are going to modify the genetic makeup of an organism by inserting required or the target gene, which is helpful for us or beneficial for us. So let's start. The next slide is that in the chapter biotechnology, we are dealing or with the required, these are the required products which you will be learning, and these are in the syllabus: yogurt and cheese, bread and alcohol, antibiotics, and a single cell protein. Truly, the single cell protein basically name is not mentioned in your syllabus, but indirectly that is added up because they are asking about the fermenters which are used for the production of single cell protein with the help of the fungus. So remember one thing, that the yogurt and cheese, these two are the product of biotechnology in which the microorganism bacteria is used. Okay, that is the bacteria is used in these two. While in the cheese, we can also add up the fungus for the flavors as well. For the bread and alcohol, we oftenly use fungus. Okay, fungus use karenge. Okay, now coming towards the antibiotic. Antibiotic is also produced with the help of the fungus. That is mostly the penicillin. Okay, and the single cell protein, that is also produced with the help of the fungus. So fungus के आपके पास बहुत ज़्यादा uses हो गए हैं. That fungus is involved in the production of yeast as well to give the flavor. That is used in the formation of bread, alcohol, antibiotic, and the single cell protein. So let's move to the next slide. Okay, just let me remove this content. Okay, here you can see that we are dealing with the production of the yogurt and milk. These are two produced with the help of the bacteria, and usually milk is required for it. Okay. You all know that the milk is a complete diet for the infants. Milk is rich in the protein, and the protein is casein. Casein is the milk protein. Okay. And it also contains definitely some fatty content. Whenever the milk is being boiled, the fats come up on the top, and that is oftenly known as balai in our Urdu. And the milk sugar, that is the lactose. The sources of milk are usually the cattle, sheep, and the goat. So my question from you people is that why we are interested in producing the yogurt and cheese in by using the milk. Milk के साथ ऐसा क्या problem है that we are going to make yogurt and cheese? That is a complete diet. It is having proteins, it is having fats, it is having the sugars in it. So let's come toward that. You can have the picture of this slide, that is very much important.
And I have underlined the most important keywords through which you can write your own sentences or generate your own content. Okay, milk, that is a very good food for the infants and even for the elderly people. But what it happens, it will become very much unpleasant within a very short period of time. Like if it is the summer season, summer में तो बहुत जल्दी क्विकली खराब हो जाता है. ठीक है, सुबह बॉयल किया तो दोपहर तक या शाम तक वो खराब हो जाता है, बट इन विंटर दैट कैन बी केप्ट एट द रूम टेम्परेचर. So ultimately, whenever that is making or giving the milk unpleasant taste, it means that there is something wrong with the milk and that can cause the food poisoning. ठीक है जी. पहला जो प्रॉब्लम है मिल्क के साथ, कि मिल्क को हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं योगर्ट और चीज से, दैट इज मिल्क बिकम वेरी मच अनप्लेजेंट in very short period of time or very quickly unpleasant to drink. ठीक है. Second point is this, that usually the human babies, they are having the enzyme lactase, and that lactase will be acting on the substrate lactose, which is the milk sugar, and that will be converting the lactose into the glucose and galactose. These two are monosaccharide while lactose is a disaccharide. सो आपके पास मिल्क में जो शुगर लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम होता है लैक्टेज. Lactase will be converting lactose, that is a disaccharide, into glucose and galactose, which are the monosaccharides. But unfortunately, in some human, in mostly elderly people, or in some infants as well, this enzyme is not produced. तो जब एंजाइम नहीं है तो मिल्क शुगर लैक्टोज की ब्रेक डाउन भी नहीं होगी, उसकी डाइजेशन नहीं होगी. और अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जल्दी से जैसे दूध पीते हैं तो उसे वॉमिट आउट कर देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. सो सच चिल्ड्रन आर नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंट. और इवन अगर एल्डरली पीपल को भी हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो दे आर ऑल्सो नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंट. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है जो मिल्क शुगर लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा. सो द सोल्यूशन फॉर द बोथ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ spoiled milk in very short time period and lactose intolerance की वजह से we are interested in converting the milk into yogurt and the cheese. So these two products are being formed. अब इसमें क्या है, इनका टेस्ट भी कंपैरेटिवली डिफरेंट है, इनका जो लाइफ स्पैन है या इनका जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बेहतर होती है एज कंपेयर टू द चीज, सॉरी एज कंपेयर टू द मिल्क. चीज की और योगर्ट की शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली बेटर है मिल्क से. तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इसको लिखना चाहें, दैट शेल्फ लाइफ yogurt and milk is, sorry, yogurt and cheese, sorry, yogurt and cheese is better than milk. तो आप इसको एडप्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है एंड आपके पास अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है मिल्क का, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं थ्रू योगर्ट एंड मिल्क. सो दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट एंड द चीज. आपने क्या करना है, योगर्ट और चीज में हम बेसिकली मिल्क की फर्मेंटेशन करवाते हैं. ठीक है, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखें जो चीज हमने यूज करनी है, दैट इज द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपल लैक्टोज से वैसे याद रख सकते हैं. लैक्टोबैसिलस. Lactobacillus is the bacteria. Streptococcus thermophilus is also bacteria. These two can be used for the production of milk. ठीक है, these two can be used for the production of milk.
Basically, streptococcus will be removing the oxygen and will be creating anaerobic condition for the lactobacillus. स्ट्रेप्टोकोकस क्या करेगा? ऑक्सीजन रिमूव कर देगा मिल्क के अंदर से। आपने मिल्क लिया, ठीक है, मिल्क को आपने बॉयल करना है, ठीक है। बॉइलिंग से ऑलरेडी प्रेजेंट उसके अंदर बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। जब ऑलरेडी प्रेजेंट और अनरिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है, ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज पे। फिर आपने उसमें, यूजली घर में मदर्स क्या करती हैं, जाग लगा देती हैं, दही डाल देती हैं, दूध के अंदर दही डाल देती हैं ताकि योगर्ट बन जाए। तो दैट योगर्ट बेसिकली इज रिच इन द लैक्टोबैसिलस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस विल बी रिमूविंग द ऑक्सीजन and will be creating anaerobic condition for the respiration of the lactobacillus, and anaerobic respiration करेगा lactobacillus और convert कर देगा milk sugar को into the lactic acid, and that is the acid। तो आपको पता है कि acid ने milk की pH को क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। एसिड है तो मिल्क की पीएच को डिक्रीज करेगा। सॉरी, दैट इज पीएच ऑफ मिल्क, ठीक है जी। अब इस एसिडिक कंडीशन में क्या होगा? दिस एसिड विल बी कॉजिंग द मिल्क प्रोटीन केसीन टू कर्डलाइज, उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर देगा, ठीक है। उस सॉलिडिफिकेशन में एक होमोजीनियस स्मूथ मिक्सचर आपका बन जाएगा योगर्ट का। यू कैन ऐड द सॉल्ट, शुगर, फ्रूट्स, एंड यू कैन ऐड द फ्लेवर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। मिंट भी डाल सकते हैं, मिंट इज माय फेवरेट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, ये एक आपको बेसिकली प्रोसेस दिखाया गया है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन किसने करनी है? स्ट्रेप्टोकोकस ने, और उसने ये प्रोड्यूस कर देना है। और फिर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टोबैसिलस करेगा, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और लैक्टोबैसिलस ने क्या किया है? लैक्टिक एसिड कैसे बनाया है? लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट किया है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हुई और मिल्क में क्लम्प्स बन गए थे, ठीक है। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेसिंग देख लें। दैट इज इन योर चैप्टर, दैट इज इन योर सिलेबस। ओके जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are used in production of some foods, like we are going to produce the yogurt and the cheese। सबसे पहले चीज भी आपने अगर प्रोड्यूस करवानी है, या आपने प्रोड्यूस करवाना है मिल्क, योगर्ट और चीज, आपने मिल्क को पेस्चराइज करना है। पेस्चराइजेशन से ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे विच आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लैक्टोबैसिलस डालना है 40 डिग्रीज पे, बैक्टीरिया एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे, और फिर इस तरह से लैक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड बाय लोअरिंग द पीएच ऑफ द मिल्क, ठीक है जी। और आप उसको इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये फ्लो चार्ट सा दिया गया, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सिंपल वही कुछ है जो मैंने अभी आपको बताया है। कमिंग टूवर्ड द चीज मेकिंग में भी आपने लैक्टोबैसिलस ही यूज करना है। बेसिकली लैक्टोबैसिलस ने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करवाना है लैक्टोज शुगर के साथ, लेकिन इसमें आपने जो चीज ऐड करनी है दैट इज अ रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम ऐड अप करने से उसके अंदर प्रोटीन्स की फर्दर क्लम्पिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो वे है वो सॉलिडिफाई, वो वे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। वे उसमें क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, ये देखते जाइए। बैक्टीरिया भी ऐड करना है, रेनिन भी आपने ऐड करना है, और दोनों क्या करेंगे? सॉलिडिफाई कर देंगे मिल्क प्रोटीन को, और लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जिसे हम वे बोलते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है।
फिर आपने क्या करना है, आपने उसको फिल्टर कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, आपने वेस्ट सेपरेट आउट कर लेना है, प्रोटीन्स को अलग कर लेना है, और उसके बाद उसको मोल्ड्स में रखकर, जो आपके पास सॉलिड कॉम्पैक्ट मटेरियल आएगा उसको मोल्ड में रखकर, किसी सांचे में रखकर उसको आपने राइप करवा लेना है या मैच्योर करवा लेना है। उसमें आप फंगस डाल के अपनी रिक्वायर का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। सो that's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz. Please do subscribe my channel and do comment if you like my videos. Thank you. Allah Hafiz.